Take out your assignments. Let's finish the assignment first. We have done all the topics and finished the assignment. फिर हम दूसरे वाले चैप्टर की थोड़ी सी रिवीजन करेंगे. Good morning, ma'am. Good morning, teacher. Take out your assignment. हो गया था एंड में, तो मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चंस. फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया था. यू आर गिवन 3 clear beakers containing liquids. इसमें एक में है salt dissolved water, सेकंड में है milk, थर्ड में है mud mixed with water. So beaker B जो है that shows Tyndall effect. उसमें जब लाइट पास करती है तो उसका पाथ विजिबल होता है. तो beaker B milk wala, that is the answer. And next, a mixture allows the beam of light to pass through, appears uniform to naked eye and cannot be filtered to separate components. You have a big beaker. जिसमें से जो path of light है that is visible, जो कि होता है colloidal solution के केस में, और इसमें से लाइट पास करती है तो लाइट का पाथ विजिबल है. And it says it cannot be filtered to separate components. What can be concluded about the mixture? आप इसके components को filter नहीं कर सकते हो. 9C, roll number 20. Tell me. Come here. Come here. Come forward. आओ बेटा. नहीं है क्या? रोल नंबर 20, 9C. रोल नंबर 21, 9C. रोल नंबर 22. कोई नहीं है क्या? जल्दी करो बेटे, हमने फटाफट से क्वेश्चंस करने. और सिंपल सा क्वेश्चन है. कल हमने और परसों भी कोलॉइडल सॉल्यूशन अटेंडर इफेक्ट ही किया है. हाँ जी. Morning, ma'am. हाँ जी बेटा. So what is the answer? Please repeat the question. Okay, the question is a mixture. A mixture allows the beam of light to pass through it like this. What I've shown appears uniform to the naked eye and cannot be filtered to separate components. What should be concluded about this mixture? B option. B option. It is a good. Keep standing and then you have to answer the next question. Also, similar question है. Why can we see a ray of sunlight streaming through a forest on a foggy morning? Options are: first option because air is a true solution, second option because light is absorbed by water droplets, third option because the Tyndall effect caused by colloidal water droplets in the mist, and fourth option because fog acts as a mirror. C option. C option because of Tyndall effect. Very good. Keep it. Section 9th E, roll number 20. 9th E. Hanji beta, please come. So this is a case-based question. I'll read the case. साथ में उसको understand करना, फिर उसके बाद question है. The case says a saturated solution is a solution in which the maximum amount of solute has been dissolved at a given temperature and pressure. It means that the solvent can no longer dissolve any more solute, and any additional solute added will remain undissolved at the bottom of container. The concentration of the solute in a saturated solution is at its maximum solubility. On the other hand, a supersaturated solution is a solution that contains more solute
than it should theoretically hold at a given temperature and pressure. This is achieved by dissolving the solute in a hot solvent and then slowly cooling it down without allowing any crystals to form. As a result, the solute remains dissolved even though it exceeds its normal solubility. Supersaturated solutions are unstable and can be easily triggered to crystallize by adding a seed crystal or disturbing the solution. So first question is, what is saturated solution? Options are, let me read the options for everybody. Options, first one is a solution that contains more solute that it can hold. A solution in which the maximum amount of solute has been dissolved. A solution that contains only solvent and no solute. And a solution that is unstable and prone to crystallization. So answer is? Anjivita, what is the answer? Be the solution in which the maximum amount of solute has been added, that is saturated solution. Next question भी आप बता दो. How can a super saturated solution be obtained? कैसे बनता है super saturated solution? Let me read the options. First one is by heating the saturated solution, by adding more solute, by cooling the solution slowly. And D is A, first A, then B, then C. Can you tell me कैसे super saturated solution बनता है? Option D. ऑप्शन डी कहता है पहले हीट करो, फिर और ज्यादा सोल्यूट डालो और फिर उसको कूल डाउन कर दो. ठीक है बेटा. तो ये कहता है कि सुपर, जैसे आप बनाते, मैंने आपको बताया था जलेबी बनती है या गुलाब जामुन बनता है तो उसके लिए चाशनी बनती है. तो नॉर्मली हम वाटर में शुगर डिसॉल्व करते हैं तो हम उतना अमाउंट में नहीं कर पाते, लेकिन जब चाशनी बनती है तो क्या उसी वाटर को वी कीप बॉइलिंग एंड वी कीप एडिंग मोर शुगर टू इट and it becomes super saturated. ठीक है. Please sit. Roll number 10 from 9E. Who's roll number 10? If roll number 10 is not there, roll number 11 can come. I hope everybody knows their roll number. Yes, please come, beta. Okay. So next question is, which of the following statement is true about supersaturated solution? First option is, it is a stable solution that can hold an unlimited amount of solute. Second option, it contains the maximum amount of solute that can be dissolved. Third option, it is achieved by cooling a hot solution without any crystal formation. And fourth, it is less concentrated than a saturated solution. Tell me what is the answer? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा वाला होता है जो अभी हमने किया? B option. B option, it contains maximum amount of pH. Is it? And C option. C option, it is achieved by cooling a hot solution without any crystal formation. देखो बी ऑप्शन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट बोला, मैक्सिमम तो सैचुरेटेड में आता है. अगर टेम्परेचर की कंडीशन दी है तब हम बी ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं. C option. क्या बोल रहे हो? C option. C option, it is achieved by cooling a hot solution without crystal formation. You can say that because आप उसमें more than, इसमें more than maximum नहीं word use किया है ना, but आप उसको teach करके ही more than maximum add कर सकते हो. ये clear नहीं है options, but I think C option will be better. ठीक है बेटा, बैठो.
Next question is what is the role of temperature in the solubility of gas? तो यही है, जैसे हमने बोला कि जलेबी के लिए चाशनी बनेगी तो उसको हमें बॉईल करके ऐड करना पड़ेगा बहुत सारा सॉल्यूट उसमें, और फिर उसको कूल डाउन करेंगे और उसमें फिर जलेबी डाल के खा लेंगे। तो हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। वैसे मैं एक बात बताऊं, इसमें अभी के लिए तो ये ठीक है, लेकिन एक्चुअली दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं। एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर कोई चीज आप किसी चीज में डिसॉल्व कर रहे हो और हीट अब्सॉर्ब हो रही है, दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर आपका सोल्यूट जब डिसॉल्व कर रहा है सॉल्वेंट में और अब्सॉर्ब हो रही है, उस वक्त तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। बस कुछ प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक भी होती हैं, उसमें आपको टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो यही है, क्योंकि हम शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में। एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसको हीट चाहिए होती है, तो आप और हीट देते रहोगे तो और ज्यादा डिसॉल्व होता रहेगा। बट देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस व्हिच आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसका मतलब जब आप उस सोल्यूट को ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट में तो बहुत सारी हीट रिलीज होगी। अब आप अगर और ज्यादा डिसॉल्व करना चाहते हो तो आप उसमें और हीट नहीं दे सकते। जैसे सपोज करो, छोटा सा ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि आपको मना किया जाता है कि एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, क्योंकि एसिड में वाटर का जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो और टेम्परेचर भी बढ़ा दो कि मैं और ज्यादा एसिड वाटर में डिसॉल्व करूंगा, दैट इज नॉट डिजायरेबल। जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसको तो आपको ठंडे टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़े। ठीक है, पर हमें अभी क्योंकि ये एग्जांपल वी कैन डू विदाउट दिस, बट यू शुड नो दैट टू काइंड ऑफ प्रोसेसेस। एंडोथर्मिक, जिसमें सोल्यूट के ऐड करने पे हीट अब्सॉर्ब होती है, और ज्यादा हीट देने पे और ज्यादा सोल्यूट हम उसमें ऐड कर पाते हैं, इसीलिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना पाते हैं। कम टू अदर रीजन। First one is rusting of iron is a chemical change. Is it a chemical change? Is it a chemical change? क्या होता है chemical change? जिसमें बोलो, सब बोलो, इकट्ठे बोलो। 9C और 9F की तो माइक ऑन है, you can tell me. क्या होता है chemical change? 9C में से कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द केमिकल चेंज? फटाफट बताओ बेटे, फटाफट हमने खत्म करना है। 9C रोल नंबर 15। कोई नहीं। व्हाट इज द केमिकल चेंज? कैन यू टेल मी? जोर से बोलो बेटे, जोर से बोलो, फिर से बोलो। नो मिस्ड इट, नहीं आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चलो, मैं आंसर आपको मैं ऑप्शन बोलती हूँ, आप बताना करेक्ट है कि नहीं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? Yes. Yes. Okay. And reason given is a new substance with different properties is formed. Is it correct? Yes. Yes. तो यही है chemical change, जहां पर नया substance बनता है with different properties. Very good, बेटो। So both the statements, assertion as well as read, that is true. Come to next question. Mixtures can have variable composition. Mixtures हमने क्या था, वेरिएबल कॉम्पोजिशन उसकी हो सकती है, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। Raise your hands. How many of you say reason is the correct statement? How many of you feel that mixtures में fixed ratios में चीजें combined होती है? Raise your hands. Is this correct? अच्छा, raise your hands if this statement is incorrect.
एक ही बच्चा बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी नहीं बोल रहे हैं। मेरी बात नहीं समझ आई। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, दिस स्टेट्स दैट assertion is mixtures can have variable composition. How many of you say this is correct statement? Raise your hands. Do mixtures have variable composition? Raise your hands if this is true. बेटा आपको मेरी बात समझ आई क्या पूछ रही हूँ मैं? मतलब आपको लग रहा है ये सही नहीं है इसीलिए nobody is raising hand. कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप? तो मिक्सचर्स की वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है बेटे, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी फिक्स्ड रेशियो नहीं होती है। फिक्स्ड रेशियो होती है कंपाउंड्स की, ठीक है? तो रीजन इज नॉट करेक्ट। सिक्स्थ इक्वेशन, assertion says compounds cannot be separated by physical method. Whose roll number 10 from 10A, 9A, sorry, 9A, roll number 10. जल्दी से आओ। Question, I'll tell you, come forward. Yes, beta. The assertion is compounds cannot be separated by physical methods. Is this true? फिर से बोलो बेटे, is this true? Compounds cannot be separated by physical method. Is this assertion correct? I don't know whether the student is responding or not. I cannot hear you. I can't even see you क्योंकि कैमरा जो है वो माइक को फोकस नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या बता रहे हो। Is your mic not working? 9A, wave your hand. Can you hear me? Wave your hand if you can hear me. 9A, raise your hands, beta, if you can hear me. Am I not audible to 9A? Okay, fix it. I don't know what is the problem. I think there is some problem with the mic again. Okay, 9E, roll number 13. 9E. Assertion says compounds cannot be separated by physical methods. Is this statement true? मेरी ऑप्शन ऑप्शन नहीं, assertion reason है ना। assertion में कह रहा है compounds cannot be separated by physical method. क्या? Okay. And the reason says they are made by chemical bonding between elements. Is this true? ट्रू Okay. आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो कंपाउंड का? हेलो? वाटर H2O वाटर H2O, ठीक है, वो केमिकली कंबाइन करता है और आप उसको केमिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते, आप उसको इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तभी सेपरेट होगा। ओके, मैं तो कहते नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a chemical change? Cutting vegetables, melting wax, burning of paper, boiling of water. तो बाकी सब में नेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ बर्निंग ऑफ पेपर में नेचर चेंज होता है। तो वो एक केमिकल चेंज है कि जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। नेक्स्ट, which property differentiate a compound from a mixture?
कंपाउंड के बारे में हमने क्या था कि उसकी फिक्स रेशियो होती है, मिक्सचर की फिक्स रेशियो नहीं होती है। कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड्स नहीं लगते, लेकिन मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल मेथड्स। अब इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। बोथ आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, यस, बोथ आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। Compounds have fixed proportion, both show properties of constituent, both are pure substances. And D, इसमें which statement is not correct? That could be more than one also. Which statement is not correct? 9th F, roll number 10. 9th F. She is absent. Number 11. Roll number 12. Okay. Yes, beta. The question is which property differentiates a compound from a mixture? Ma'am, B option. The option क्या बोलता है? Compounds have fixed composition. Compounds have fixed composition and mixtures have variable composition. Okay, please sit. Same section, roll number 22. 9th F, roll number 22. Not there. Roll number 23 आ जाओ. He is absent. Okay, roll number 23. Two chemical species X and Y combine together to form a product P, which contains both X and Y. X plus Y gives P. X and Y cannot be broken into simple. Option D. मुझे तो read करने दो. Okay, X and Y cannot be broken down into simpler substances by simple chemical reaction. Which of the following species X, Y, P are correct? क्या आंसर दिया आपने? Option D. D. B says 1, 2 and 4 तीनों correct हैं. And first statement says D. D for doll. Yes. Okay, ठीक है. It says B says 1, 2 and 4. One is P is a compound. Okay. Because P क्यों compound है? Reason दोगे? Is formed by mixing of two elements X and Y. वो तो ठीक है, वो तो मिक्सचर भी हो सकता है. और स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें देखो, उसमें आपको मिल जाएगा कि P कंपाउंड क्यों है. Because X and Y cannot be broken down into simpler substances. And that type of thing is called compound, right? Then third statement, X, Y are elements, okay, and fourth says P has fixed composition. Compound की fixed composition होती है. ठीक है बेटा, बैठो. Next is the case study. During an activity, students in group C prepared a mixture of chalk powder and water, and group D prepared a mixture of milk in water. Chalk powder in water and milk in powder. Sorry, milk in water. The teacher passed a torch beam through each beaker and asked students to observe the light path and particle behavior after 10 minutes. Group C's mixture
showed visible particles sitting at the bottom. Group D's mixture looked uniform and the light green was visible. Okay. 9th A, roll number 5. 9th A. Which of the following C's mixture? ग्रुप सी का मिक्सचर कौन सा वाला है? और वो ध्यान से क्वेश्चन को टेल मी. Suspension. Suspension because reason बताओ. Because chalk powder does not dissolve in water. And it settles down after some time. Second last statement there. Right, very good. Next question, why did group C's mixture stop showing Tyndall effect after some time? Can you give the reason? A boy is raising hand in 90. अभी रुको. Let us answer. अगर बाद में देना, let her answer. जो भी उसको आता है उसके बाद I'll ask you. ठीक है? Because you were raising. बेटा कुछ तो बताओ कि आपको क्या लगता है, पहले वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा था, उसके बाद वो नहीं कर रहा है, तो कौन सा सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है, और अगर वो बाद में नहीं कर रहा है तो कौन सा वाला नहीं करता होता? बस वही उसका आंसर है. बोलो. अब मुझे दिख नहीं रहे, आप चलेंगे क्या? जो स्टूडेंट आंसर कर रही थी, इसी दे. अच्छा चलो बैठो फिर. 9th E, the boy who was raising his hand, please come forward and answer. Ma'am, group C's mixture stopped showing the Tyndall effect after some time because we know that the group C's mixture is a suspension and its particle size is larger than 1000 nanometer and they do not get dissolved in a solvent and they remain suspended through the bulk of medium. So they will get settled after some time, which makes it unstable. Okay, so how was it able to show the Tyndall effect beforehand? Before 10 minutes वो कैसे show कर पा रहा था? And because we have stated the solutions, so that's why these particles do not get suspended and they show Tyndall effect. But after some time, they will get settled. Suspended. Okay, very good. But initially they remain suspended. When we keep it for some time, the particles they start to settle down, and from colloidal solution they start forming suspension. Right? Their fat particle size बड़ा होने की वजह से जो आपके solute particles है वो bottom पे settle down हो जाते हैं. ठीक है? Last question. What type of mixture did group D observe and why? You can answer. Same boy can answer. What type of mixture did group D observe and why? Group D में क्या था? Group D's mixture looked uniform and the light beam was visible. Light beam किसमें visible होती है? It's simple. हाँ जी, 90 same boy. I said same boy. If anybody else want to answer, raise your hand. फटाफट जिसकी चांस नहीं आई है और वो विलिंग है, मुझे बताना है what type of solution is. फटाफट raise your hands. If I am able to see, I'll call you. Nobody is raising hand except their boy. Please, no, you lower your hand. Anybody else? Who would like to answer? फटाफट girls में. अच्छा, अगस्त में किसका बर्थडे है? रेज योर हैंड. अगस्त में किसका बर्थडे आता है? किसी का नहीं आता क्या?
जिसका बर्थडे अगस्त में आता है फटाफट आओ, आंसर देना आपको जल्दी से बेटा, हमने फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना। ऐसा नहीं हो सकता किसी के सेक्शन में अगस्त में किसी का बर्थडे नहीं आया। चलो रहने दो, फिर मेरा भी नहीं है वैसे अगस्त में, तो फिर मैं भी ना बताऊं। हाँ जी, 9th E, रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 फ्रॉम 9th E। नहीं है, रोल नंबर 4 आ जाओ फिर। मैम कोलाइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन जैसे आप लाइट ऑफ बीम बात करेंगे तो विजिबल होगा। वेरी गुड, प्लीज सेट। अच्छा, आपने फर्स्ट चैप्टर किया, दिस असाइनमेंट इज कंप्लीट नाउ राइट। आपने फर्स्ट चैप्टर किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम देखते हैं हमें उसमें से कितना याद है। ठीक है, सो द फर्स्ट इक्वेशन इज, जब घर में मैगी बनती है किचन में तो आपको पता चल जाता है 9th F, रोल नंबर 13। अब पता नहीं मैंने रिपीट ना किया हो तो 3 ही आ जाना अगर 13 नहीं है। 13 इज माय फेवरेट नंबर है। हाँ जी बेटा, जब घर पे मैगी बनती है आपको पता चल जाता है चाहे आप किचन में ना भी हो। टेल मी, आपका माइक चल रहा है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। चेक योर माइक, इज इट वर्किंग? I cannot hear you. नहीं बच्चा, यस। देखा भाई ये आवाज। आपको मैगी अच्छी लगती है? यस। ठीक है, तो आप मुझे बताओ फिर कि कैसे पता चल जाता है आपको कि मैगी बन गई है? उसकी खुशबू आती है? अब यस नहीं आ रहा मुझे, पर आपको बहुत फेमस एक क्वेश्चन पुट किया जाता है, द स्मेल ऑफ, लेट्स से, हॉट sizzling Maggie reaches you. Particle of matter have kinetic energy and moving the low temperature the kinetic energy is low and hence the particle moves slowly but the temperature rise, the kinetic energy increase and hence particle move faster so we can smell the hot food. Yes, beta, very good. बहुत अच्छे से आंसर किया, very good. बैठो। So she says particles of hot sizzling food possesses large kinetic energy and diffuse in air. ठीक है, particle of foods के पास है kinetic energy and they diffuse in air rapidly and reaches separates meter away, whereas the particle of cold food, they possess less kinetic energy and they do not reach us. तो अगर मैगी का पैकेट पड़ा है या बनी हुई मैगी पड़ी है तब आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर मैगी बन रही है तो उसमें जब वो बॉईल हो रहा है तो उसकी जो खुशबू है वो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वजह से वो खुशबू आप तक ट्रेवल करेगी, वो पार्टिकल्स डिफ्यूज करेंगे किचन से आपके रूम तक और आप उसको स्मेल कर सकोगे। ओके, देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से जैसे आप गर्मियों में बहुत सारे घरों में फ्रिज में वाटर नहीं रखा जाता पीने के लिए, rather we use earthen pots.
तो आप मुझे बताएंगे हाउ डज द वाटर kept in an earthen pot or we say matka become cool during summer? How does the water kept in an earthen pot become cool in summer? Who is roll number 17 in 9C? हाँ जी बोलो. Yes, beta. Do you know the answer? जोर से बोलो. नहीं सुना रही तेरे में. जोर से बोलो बेटा. और जोर से बोलो. मुझे तो यस नो भी नहीं पता चल रहा. मुझे नहीं आंसर आता है. यस और नो. नो. ओके फिर ठीक है कोई बात नहीं बैठो. रोल नंबर 19 9C. Who's asking me to answer? Yes, oh, boy is raising hand, I guess. 9C में. तो जो वॉल वाली साइड पे एक बच्चा हैंड रेज कर रहा था. लेट्स हिम कम. हाँ जी बेटा प्लीज कम. Can I? Okay. ओके बेटे प्लीज सेट. देखो मुझे पूरे अच्छे से तो नहीं पता चला बट आपने जो आंसर दे नहीं आल आंसर ठीक है. जो अच्छा कौन बोल रहा है 9F से कोई बोल रहा है? Yes. ओके प्लीज कम. अभी बताओ. Due to small holes present in the walls of pot, water oozes out slowly. फिर उससे क्या होता है? It comes out on the outer surface. It Yes. evaporates. The Very. heat energy needed for evaporation is taken from water kept in the pot. So water kept in the pot becomes cool. Yes. Very good बेटो. देखो ये कह रहा है कि जो पॉट होता है जिसमें आप वाटर पुट करते हो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. तो क्या होता है जब आप इसमें वाटर फिल करोगे ये वाटर इन पोर्स में चला जाता है. ठीक है. तो जब सनलाइट इस पे पड़ती है अगर पॉट पे सीधे पड़ती है तो वो पॉट वैसे गर्म हो जाता है. लेकिन वो गर्म इसलिए नहीं होता क्योंकि जब यहाँ सनलाइट पड़ती है तो इन पोर्स में घुसे हुए वाटर पे वो पड़ती है और वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और ज्यादा वाटर फिर इन पोर्स में आ जाएगा. तो उससे क्या होता है वो खुद इवेपोरेट हो जाता है लेकिन अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट नहीं होने देगा. उनको हीट अप नहीं होने देगा. वो जो सनलाइट है डायरेक्ट इन पोर्स में जो घुसा हुआ वाटर ड्रॉपलेट है वो अब्सॉर्ब कर लेता है. तो वो खुद पे सारी हीट ले लेगा खुद इवेपोरेट हो जाएगा लेकिन अंदर वाले पानी को हीट अप नहीं होने देगा. ठीक है. रोल नंबर 17 जिसको नहीं आता था ध्यान से सुनो. नेक्स्ट टाइम जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको याद रखने हैं इस पॉट के पोर्स. पोर्स में जाने वाला वाटर मॉलिक्यूल और सनलाइट की वजह से उस वाटर मॉलिक्यूल का इवेपोरेट होना. ठीक है कि वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा और हीट जो है वो पॉट के अंदर वाले पानी को गर्म नहीं कर पाएगी. सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल को
इवेपोरेट कर देगी, ठीक है. So we can write an earthen pot has small pores in the walls. When water is poured into it, some of it seeps through these pores into the outer surface. ठीक है, या outer surface में pores में seep कर जाएगा. The heat required for evaporation is taken from the earthen pot. यहाँ से जो भी heat है evaporation के लिए वो उसके surface पे जो भी molecules है वो ले लेंगे, ठीक है. And from water in it, as a result, water in the earthen pot gets cooled down. ठीक है, हीट यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है और अंदर पानी ठंडा रहता है. लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत कॉमनली आपने सुना होगा. It says, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? हाँ जी, 9 E. मैम कैन आई नहीं, अब नहीं, आपने बता दिया. 9th E में से कौन बता रहा है? तो नंबर 7, 9th E. जल्दी से बताओ बेटा, फिर आप बोलोगे मैम टाइम इज ओवर. इसके बाद ही ओवर होगा. हाँ जी बोलो, आप बोलो. Surface area of the saucer is much greater than the cup. Yes, very easy. Surface area ज्यादा होगा तो होगा क्या वैसे? Which increase the evaporation. Yes, more surface area will lead to more evaporation. So you can say the rate of evaporation. Please say it very good. The rate of evaporation increases with increase of surface area in case of saucer as compared to the cup. Thus, hot tea or milk in saucer cools faster than cup. Right? Okay. Bye. Thank you. कल हम इसी को continue करेंगे. Thank you so much.